today we will discuss salts. Okay, and topic is chemicals from common salt. Okay, we know how we get salt from seawater. We get salt from seawater by using the process of evaporation. Okay, so I'm boarding on this one. so we know we get Yes, ma'am. common salt. What is the formula of common salt? Common salt, yes, it's NaCl. Yes, sodium chloride. Okay, sodium chloride formula is NaCl. It is also called table salt because it is necessary ingredient, important ingredients on our table. Okay, so it is also called table salt. So how we get common salt from seawater? So we know that seawater contains many salts, which is dissolved in it. Okay, so we can separate sodium chloride by using the process of evaporation. Okay, evaporation is the process by which we get salt from seawater. And do you know what is evaporation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Shreyas Singh, Shreyas, what is evaporation? Yes, ma'am. What is evaporation? Water changes from the water changes from the vapor. Okay. Srini Pradhan, what is evaporation? Process in which water vaporizes from its and changes from its liquid state to the gaseous state is known as evaporation. Yes, very good. So evaporation is the process by which we get salt from seawater. Because if we get salt from seawater, so seawater is trapped in a large shallow pools. ठीक है? एक बड़ा सा pool बनाया जाता है, उसी में वो sea water को रख दिया जाता है. Now it is allowed to evaporate in the presence of sunlight. ठीक है? In the presence of sunlight, it is allowed to evaporate. So we know by in evaporation water starts evaporating and salt is left behind. Okay, so there are some impurities is also present in NaCl, in common salt, okay, like MgCl2, MgSO4. These are the impurities which is present in common salt. So to remove impurities we just purify the salt. Okay, first क्या करेंगे, सी वाटर को ट्रैप इन अ शैलो पूल. Yes. Yes, it takes large time. So we just trap large seawater in a large shallow pool. After that, it starts evaporating in the presence of sunlight. Okay, evaporation starts in the presence of sunlight. Then water starts evaporating and salt is, yes. Ma'am, like this water is evaporated also with some, control methods also, ma'am, like not only with sunlight. Yes, beta. Room temperature is also considered. So, when we trap seawater in large shallow pool, then it starts evaporating. Then water gets evaporated and salt is left behind. And that salt also contains some impurities. Okay, impurities, that is MgCl2 or MgSO4. These are the impurities which is present in salt. So to remove these impurities, yes, it's magnesium chloride and magnesium sulfate. By using suitable method, we just separate impurities from the salt. Okay, so this is how we can get salt from
seawater. Which process is used to get salt from seawater? Evaporation. Yes, evaporation. Now, how we can get rock salt? Do you know what is rock salt? Do you know what is rock salt? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, when seas were trapped in these mountains, Yes. then water got evaporated and salt were left. This is why it is known as rock salt. Yes, very good. So here it is written that when seas of bygone ages dried up, ठीक है, आपकी जो लंबे टाइम से जो सीज हो जाएगी, सी होगी वो सनलाइट की हेल्प से वो ड्राई हो जाएगी. So it means rock salt is left behind. ठीक है, beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Means we can mine rock salt just like coal. जैसे कोल को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वैसे सेम रॉक साल्ट बताते हैं. जो भी बाहर बहुत पुरानी आपके समुद्र होंगे, सीज होंगे, तो वो सब क्या होते हैं, अपने आप ड्राई हो जाते हैं एवोपरेशन के मेथड से. देन रॉक साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, एंड इट इज ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. ठीक है, इट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज. सो yes, so there is a difference between common salt and rock salt. We can separate common salt from sea water, ठीक है, by the process evaporation. But in rock salt, beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है. Yes. Ma'am, does the rock salt lake has also sodium chloride? Yes, beta. But now it has more impurities than Yes, it has no impurity. That's why it looks brown in color. But formulas are same for both. And ma'am, what is the meaning of bygone ages? Bygone ages means कि बहुत साल से पुराने हो, बहुत सालों से ऐसे ही पड़े हो. ठीक है, बहुत सालों से सूख गए हो, जो ड्राइड हो गए, मतलब कंटिन्यूस पे सनलाइट पड़ रही है और उसमें पानी कम हो जाता है, एवोपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. Ma'am, what is the difference between black salt and white rock salt? बेटा ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो आपका रॉक सॉल्ट, वो हिमालयन से बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, वहाँ से आपको मिलता है. रॉक सॉल्ट आपको मालूम है जो सीज आपके सूख जाते हैं उनसे मिलते हैं. You must have heard about Mahatma Gandhi Dandi March. Yeah, ma'am, we have read. You have read? Yes. And common history. So in his Dandi March, sodium chloride was he has given much important symbol in our struggle for freedom. So now, common salt, a raw material for chemicals. A raw material for chemicals means we can use common salt to prepare other chemicals. That is sodium hydroxide, sodium carbonate, ठीक है, sodium hydrogen carbonate. So it's a raw material for manufacture of certain chemicals. ठीक है, where we use common salt for preparation of sodium hydroxide, baking soda. We know the formula of baking soda. What is the formula of baking soda? NaHCO3. Yes, sodium bicarbonate. ठीक है, baking soda NaHCO3, sodium bicarbonate. ठीक है, baking soda is a common name. Washing soda, bleaching powder and many more. So it is used as a raw material for preparation of certain chemicals. Now come to sodium hydroxide. You know sodium chloride is hygroscopic in nature. Hygroscopic. Means it takes up moisture from the surrounding. ठीक है, it takes up moisture from the surrounding, means from air or anything else. It becomes wet. You know, it is hygroscopic. Hygro means moisture.
become wet when it comes in contact with air because of its hygroscopic nature. ठीक है, ये नया टर्म है, आपको कहीं साइड में नोट कर लो व्हाट डू यू मीन बाय hygroscopic. So NaCl is hygroscopic in nature because it takes up air from the surrounding, from the air. It takes up moisture from the air, ठीक है, and it becomes wet. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. That's why after a long time the salt Yes. becomes moist. Yes. Because of its nature, hygroscopic nature, it becomes wet. If we kept salt open in the Ma'am, presence could of, you please explain this hygroscopic nature? yes, hygroscopic means it takes up moisture from the air. ठीक है, आप देखो नॉर्मल आप सॉल्ट रख दे रहे चूल्हे में तो वो क्या हो जाता है, नमी आ जाती है इसमें, गीला हो जाता है. ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर. ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है क्योंकि जितनी भी एयर में मॉइस्चर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट्स व्हाई इट बिकम वेट. इज इट क्लियर? Okay. ओके. Yes, ma'am. Clear. So we know the uses of salt, common salt. We can use salt in our food items, ठीक है, to increase the flavor of food and for curing meat. मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड वी आल्सो यूज सॉल्ट फॉर मेल्टिंग आइस, स्नो. ठीक है, इन कोल्डर कंट्रीज यू सी वी कैन ऐड सॉल्ट, वी कैन पुट सॉल्ट ऑन द आइस. ठीक है, जो आइस आपकी जो कोल्ड कंट्रीज होती है उसमें हम क्या यूज़ कर देते हैं, वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो वी यूज सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट का काम क्या होता है, सॉल्ट जो होते हैं वो जो बॉन्ड होती है बीच किसके बीच में, आइस. यू नो देयर द केज लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन आइस, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ठीक, इस तरह केज लाइक स्ट्रक्चर होगा. इफ वी पुट सॉल्ट ऑन इट, अगर हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वाटर की, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लो क्या कर देती है, लो कर देती है. ठीक है, मीन्स इट डू नॉट फ्रीज एट व्हेन वी ऐड सॉल्ट ऑन इनटू द आइस. ठीक है, फ्रीज नहीं होंगे फिर से वापस, क्यों? क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है उसको लो कर देती है. इनके बीच में जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज आइस. We use salt for melting ice which is collected on the roads. Okay, so there are certain uses of NaCl. We can use to preserve pickles also. Oils and salt is needed for preservation of pickles. Pickles आपको पता है? Do you know what is pickle? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अचार. कि अचार को भी अगर पचाना होगा जिसमें बैक्टीरिया या कोई फंगस वगैरह ना लगे उसके लिए भी हम सॉल्ट ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं. ठीक है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर सर्टेन यूजेस. सो इट इज द एसेंशियल कंपोनेंट इन आवर डाइट. यस, Ma'am, how does it prevent from leaking? यस, बेटा रिपीट योर क्वेश्चन. Ma'am, how does salt and oil preserve this? बेटा इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट एंड Ma'am, ऑयल what does it have? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रोकते हैं, इट इनहिबिट द ग्रोथ. यस, Ma'am, what does it have that prevents microorganisms to grow? बेटा कभी आपने सुना है कि नमक में कीड़े लगते हो, ये नमक में चींटी लगती हो, ये नहीं सुना है ना. सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ इट्स नेचर इट इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ कम टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यू कैन आल्सो कॉल इट एज a brine. Brine term is used for sodium chloride. Here it is written
Sodium chloride is also called brine. Okay. So how we can prepare sodium hydroxide? We know. Yes, brine is an aqueous solution of sodium chloride. It's an aqueous solution of sodium chloride. ठीक है, अगर आपने ये सोडियम क्लोराइड है, if we add water into it, then this solution is called brine. Okay. Yes, it's a brine solution. Okay. So when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, अगर हम सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो it decomposes into sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. So what we get when sodium hydroxide react with water, ठीक है, in the presence of electricity. So we get sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen. So we know when sodium chloride react with water, ठीक है, in the presence of electricity. So we get, अब यहाँ आपको पता है it gives H plus and OH minus ion. ठीक है. Now sodium combined with OH and form a salt that is sodium hydroxide. Okay. Now what is left behind? There are two hydrogen atoms. ठीक है. Hydrogen is left and chlorine is left. Now it produces hydrogen gas and chlorine gas. Okay, now we have to balance this equation. There are three hydrogen inside of reactant. Inside of product. On the side of product. Product में आपको देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक यहाँ पे है. Three hydrogen atom में odd number है, so make it even. Right to here. 2H2O. ठीक है? Now there are two chlorine atom on the product side, so write 2 here. Now there are two sodium atom in the reactant side, so not write 2 here. ठीक है? This is how we can balance chemical equation. So when sodium chloride react with water, so water breaks into H plus and OH minus ion. Then sodium react with hydroxide ion and form sodium hydroxide. After that, hydrogen and chlorine gas is evolved during this reaction. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Any doubts? Any questions? No, ma'am. Okay. Now here in this figure 2.8 we get chlor-alkali process. Chlor-alkali term means alkali means NaOH. ठीक है. Chlor is used because during the reaction chlorine gas is evolved. ठीक है. That's why this reaction is called chlor-alkali process. ठीक है. इस reaction को chlor-alkali process कहते हैं because in this reaction we get alkali, that is NaOH, and chlorine gas is also evolved. That's why chlor is written. Yes. Ma'am, what is the indication of hydrogen gas? Yes, beta, because in this reaction we get two gases. अब आपकी ये reaction है, ठीक है. अब ये explain करेंगे figure 2.8. ठीक है. So see, chlorine gas is given out at the anode. ठीक है. chlorine gas आपको anode पे दी गई है, यहाँ पे. ठीक है, anode पे. And hydrogen gas is at cathode. Now sodium hydroxide solution is formed near the cathode. And sodium hydroxide आपका कहाँ form हो रहा है? cathode के पास. इधर form हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ देखो आपका सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन में डाला गया. NaCl plus water is added into it. ठीक है. Now NaCl start moving here, Na, ठीक है. Na आपका इस साइड मूव कर रहा है और क्लोरीन आपका इस साइड मूव कर रहा है. ठीक है. और सेम देखो हाइड्रोजन वाटर को ब्रेक कर दिया है H+ और OH- आयन में.
ठीक है, दे आर मूविंग टू देयर अपोजिट साइड, जिनकी साइन अपोजिट होगी उस साइड में मूव करेंगी, इसमें रिएक्शन होता है। ठीक है, एक पे आपका क्लोरीन गैस इकट्ठा हो जाएगा एनोड पे और दूसरे पे आपका हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगा। और ठीक है, और जो ब्राइन सॉल्यूशन रहेगा इट कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। So we know the uses of chlorine. See the uses of chlorine. It is used for water treatment. Water treatment के लिए यूज होता है स्विमिंग पूल्स में। PVC, PVC is a polyvinyl chloride. You see plastic pipes at your home. PVC is a polyvinyl chloride. They are made of PVC. Yes, polyvinyl क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड? जो पाइप आपके यूज होते हैं, ठीक है, जो वाटर सिस्टम के लिए और प्लास्टिक की पाइप होती है, दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, वो केमिकल से बनते हैं। तो उसमें आपको कौन सा यूज होता है? क्लोराइड। क्लोराइड टर्म आया मीन्स क्लोरीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट इट इन योर 12th क्लास। ठीक है, water polymers, what is PVC, and chlorine is also used as disinfectants. It kills growth of microorganisms. ठीक है, तो उसमें भी यूज होते हैं। CFCs, chlorofluorocarbons, you know extra use of chlorofluorocarbons, it depletes ozone layer. Yes, ma'am. ठीक है, These are also used in refrigerators and ACs. yes, it causes skin cancer. And refrigerator release too much chlorofluorocarbons in our atmosphere, so it causes skin cancer. It also depletes ozone layer. So what are the uses? यहाँ पे देखो ब्राइन का यूज किया है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया है। डिग्रीजिंग मेटल, मेटल को डिग्रीज करता है। ग्रीस आपको पता है, ग्रीजिंग करना। ठीक है, ये डिग्रीज करता है। रिमूवल, ग्रीस का जो रिमूवल करता है, ग्रीस जो जम जाते हैं उसको हटाता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट में भी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फैटी एसिड एंड फॉर्म सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोप और डिटर्जेंट में बनाते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है किसके साथ? फैटी एसिड। फैटी एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, नाउ पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग में भी यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। Ma'am, यस, you said using the swimming pool, but is there the same process that we use for the swimming pool? I'm not able to understand what are you saying. Ma'am, that is sodium permanganate, which is there in swimming pool, like if before going to that. Chlorine tablets are dropped in the swimming. Yes, It is used as a medicine in water treatment plants. yes. So fuse hydrogen. Ma'am, but it also we have studied like sodium permanganate solution is also Used in swimming made pool, in yes. that swimming pool. Yes. Chlorine and sodium permanganate is also used. Okay, in some cases, but mostly chlorine is used for water treatment. Now, in chlor-alkali process, we get sodium hydroxide, hydrogen and chlorine. तो आपको पूछता है name 3 product which you get in chlor-alkali process. The answer is we get when Not get HCl. no, we don't get hydrochloric acid. Ma'am, not hydrochloric, ma'am, sodium hydroxide. Yes, we get when NaCl react with water, we get sodium hydroxide and hydrogen and chlorine gas is evolved during this reaction. Don't write HCl. HCl यहाँ नहीं होगा बेटा, ठीक है? Because in this process, Okay, ma'am. it is written because of the product form chlor for chlorine and alkali for
Okay, that's why its name is chlor-alkali process. This process is also called chlor-alkali process. Do you know what is Haber's process? Haber's process आपने नाम कहीं सुना है? No, ma'am. So Haber's process is the process by which ammonia gas is prepared. ठीक है? टर्म आता है Haber's process. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज पूछा है, ठीक है? What are the uses of hydrogen? तो hydrogen is used for the preparation of ammonia. ठीक है? And that process is called Haber's process. Okay, manufacture of ammonia. This process is called Haber's process. It is used for manufacture of ammonia. And what is the formula of ammonia? NH3. Yes, it's NH3. So hydrogen is used in Haber's process, in which we manufacture ammonia gas. That is a very So pungent gas. ammonia does not occur naturally, it is an artificial made. Yes, it is artificially prepared, beta. It is artificially prepared in the laboratory. That is why it is prepared through a process called as Haber's process. It's artificial. Yes, ये artificial prepared किए जाते हैं. ठीक है. So we will discuss bleaching powder in our next class. Complete your notes. ठीक है, complete your notes, send it to me. Chapter second में आपका ओवर होने जा रहा है bleaching powder, baking soda and washing and plaster of Paris. Only 4-5 topics are left. Anna, please share us that PPT of this acid bases and salt. Okay, I will share, beta.